Hello friends, a very warm welcome to all of you. I am Vikas Bhardwaj. Welcome to Ansarkari. In the series of taking up very important personalities, that is from different perspectives and subjects, today our goal is to talk about a very famous personality, Mahadev Govind Ranade, a very famous social reformer, economist, liberator, thinker, editor, educationist, and whatnot. Our goal is to understand his contribution and his ideas from lesser known, or you can say important perspectives. So, a warm welcome. Every word is important. You must listen and understand it keenly, thereby getting success. Mahadev Govind Ranade, if you talk about his contributions, he was opposed to the British exporting Indian raw material for factories in London. एक जनरल बात हमने की, because if you talk about who is father of Indian economics, then we say it was M.G. Ranade. We'll be talking about it somewhere else in the presentation also. He was understanding, वो जानते थे कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, जिसकी आज हम बात करते हैं. भारत की आत्मनिर्भरता की बात महादेव गोविंद रानडे भी कर रहे थे. That is why he was against ruralization. एक और एस्पेक्ट की अगर बात करें, ही वॉज डिनाउंसिंग कास्ट सिस्टम. बट यस, डेफिनेटली अनटचेबिलिटी की बात हुई, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया. एज फार एज विडो रीमैरिज एंड वुमेन इज कंसर्न, ही वॉज ए पैशनेट चैंपियन ऑफ द सेम. रानाडे इस्टेब्लिश प्रार्थना समाज. नाम पे जाइए, प्रार्थना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यानी प्रेयर सोसाइटी. दैट मीन्स जो हिंदुइज्म के रिचुअल्स हैं और उसके जो कर्म कांड हैं, उसके अगेंस्ट है रानाडे. ही इज बिलीविंग इन द आइडिया ऑफ गॉड, अ यूनिवर्सल गॉड. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट हिंदुइज्म इज अ ग्रेट रिलीजन, बट Hindu society must reform itself through awareness and definitely through rationality. That is why हम कह सकते हैं Ranade's ideas are embedded into Western ideas. पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित हैं या उनको समझना चाहते हैं. So along with Atmaram Pandurang, Bal Ganesh, Bal Mangesh Wangle and Vaman Abaji Modak, he went on to establish Pratna Samaj. That is a different story. Also, he was a founding member of Pune Sarvajanik Sabha, again a society which is bringing civic and important issues to the notice of the government, and Ahmednagar Education Society. So these bodies showcases that Ranade was an active personality and he was a giant in his own times. अपने आप में वो जनक थे. He established number of institutions, for example, वेद शास्त्र उत्तेजक सभा. अब वेद शास्त्र उत्तेजक, नाम पे जाइए, इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्रास इन सच ए वे वेयर इट इज यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू द प्रेजेंट जनरेशन. क्या होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक और सभा का गठन किया, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा. ग्रंथोत्तेजक सभा यानी जो ग्रंथ हैं, जो माइथोलॉजी, यू कैन से एपिक्स हैं, what they should teach us, what we should pick up. He was closely linked with Hindu Prakash newspaper, and it was built on the ideology of social and religious reform. So he was a social reformer, he was a religious reformer, but question उठता है, of what kind? That is why if we say he believed in humanized, equalized and spiritualized values, that means he is believer in the idea that humanity is of great consequence, it is most important, everybody should be equal, society must remove all inequality. यानी कि महादेव गोविंद रानडे इज ए बिलीवर इन द आइडिया दैट एक तरीके से कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, हायरार्की नहीं होनी चाहिए. He is believer in the idea of spiritualization. Spiritualization cannot come only through puja. It comes through self introspection.
It comes through moral and ethical values. It comes through certain principles which are very important for civilized life. So Rana Day कहते हैं that Bhakti movement have taught us a lot. Vedanta is of great consequence. That is how Rana Day is talking about concept of equality, which is an important part of democracy also. He was founder member of Social Conference movement, which played very important role in a democratic manner in promoting social ideas. As a founding member of Congress, he plays major role in shaping country's initial outlook towards social reforms. धीरे किंतु सहज भाव से उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात की. मिलिटेंट आइडियाज को डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर रहे हैं. He is a believer in the fact that we must look forward to those key ideas जिनसे भी हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो सकता है. So he is a blend of different ideas. As I already said, he was known as father of Indian economics, or he is known as father of Indian economics. और उन्होंने एक टर्म पे बहुत एम्फसाइज किया, रेट्रोगेट मूवमेंट. जब मैन्युफैक्चरिंग विल गो डाउन, एग्रीकल्चर विल गो अप, लेबर्स or you can say labor class is not getting enough wages and enough livelihood dimensions, that is called retrograde movement. He believed urbanization is the key. He believed industrialization होना चाहिए, लेकिन किसके पैसे से? अपने पैसे से, our own money, not through the colonial money. So you can say economic development का मतलब है prioritizing industry and commerce over agriculture. And as I already said, we can move the point. Next point, he was one of the founders of Widow Remarriage Association in 1861, and he believed in the idea that हमारे numbers से काम नहीं चलेगा. It is about conviction, devotion, and readiness for self-sacrifice in all the honest workers in the cause. यानी सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में जब पॉसिबल है, जब हम उसके लिए कीननेस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ सोसाइटी को साथ लेकर चलेंगे. चाहे फिर वो चाइल्ड मैरिजेस की बात हो, सती प्रैक्टिस की बात हो, या विडो रीमैरिजेस की बात हो, और या फिर एजुकेशन प्रमोशन की बात हो. एवरीवेयर वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिस्ट्रेन. यानी हम अपने आप में शपथ लेंगे, हम बातों को क्लियरली पुट अप करेंगे. दैट इज व्हाट ही वांट्स टू कन्वे. Rana Day believed that there are different methods which can be advocated. For example, he advocated traditional method, जिसके अंदर हम यूज करेंगे अपने टेक्स्ट को. Then he advocated conscience method, probably what is right and wrong, moral values, क्या सही है क्या गलत है, इसका अंदाजा हमें होना चाहिए. Third, he promoted and believed in legislation method, किसी भी चीज के लिए कानून बनेगा, so ignorant people will be ready to follow the wise people. But he was not in favor of rebellion method, that is completely disconnecting yourself with Hinduism. So you can say by one example, for example, Rana Day's closest associates in social reform was Malabari's friend and biographer Dayaram Gidumal. It was Dayaram Gidumal जिन्होंने प्रपोज किया था कि मैरिज एज चेंज होनी चाहिए, और वो पीनल कोड को चेंज होने से हो सकती है, 12 साल होनी चाहिए ना कि 10. That should be the minimal age. And you know there will be different opinions on this. Rana Day will be of the opinion that yes, legislation can really help if it is making people aware about their duties. हम कह सकते हैं लार्जेस्ट क्लेम राणा डे का उनके रिमेम्बरेंस के लिए, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. ही वाज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द मूवमेंट. ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शोकेसिंग न्यू पाथ टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सोशल रिफॉर्म्स. इसीलिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक तरीके से हमारे नेशनल मूवमेंट को
बिगनिंग से स्ट्रीमलाइन करने में, चाहे फिर वो नाइट स्कूल्स हों, चाहे फिर वो वर्कर्स के लिए स्कूल्स खोलने की बात हो, चाहे फिर वो पैम्पलेट्स की बात हो, चाहे फिर वो डिस्कशंस, वुमेन एजुकेशन, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस की बात हो, Rana Day was everywhere at the forefront. That is why we must acknowledge and we are very proud that we had such great personalities. They are the true nation builders of India. Thank you very much. I hope you will be able to enlighten yourself. You can further search about it. You can get back for any comments or any kind of ideas. Kindly like, share and subscribe our channel and do get success by intelligent smart work. Thank you very much.